तो जैसा हमने डिसाइड किया था संडे को, विल डू दी डिस्कशंस इन ब्रेकआउट रूम्स ऑन वेदना के बारे में। आस्वादन क्या है, आदिनव क्या है, और उससे निस्सरण क्या होगा। और वेदना जो है हर इंद्रिय के द्वार पे होगी, तो हम कोशिश करेंगे पहले कि थोड़ी देर पहले हर एक ब्रेकआउट रूम में थोड़ी देर चित्त को शांत करके फिर देखते हैं कि किस को हम लोगों को मालूम ही है वैसे, और अपना बारे में तो इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किस इंद्रिय के द्वार पे किस तरह की वेदना, वो चक्षु संस्पर्श वेदना है कि घान संस्पर्श है कि शोध संस्पर्श, किस तरह की वेदना जो है जो आंख के स्पर्श पे जागती है, कान से कि नाक से कि टेस्ट से कि स्पर्श से या मन से, कौन सी वेदना है जिसके कारण हमारा मन बहुत ज्यादा अटक जाता है। जो हमारा एक प्रोमिनेंट संखारा है उसको आइडेंटिफाई करें। प्रोमिनेंट हमारी अटैचमेंट है उस तरह का। स्वादन मतलब एक तरह का वी सीक प्लेजर इन दैट, जिसके अंदर प्रति स्ट्रॉन्ग राग है। तो उसको अगर हम एक दो हायरार्की में बना लें, या कम से कम एक तो आइडेंटिफाई करें, एक या दो तो आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये हमारे स्ट्रॉन्ग आस्वादन है। और वो आस्वादन इसीलिए बने हुए हैं कि उसमें डेंजर हम ठीक से देख नहीं पाए हैं। अगर डेंजर सचमुच में देख लें तो आस्वादन छूट जाना चाहिए। तो देन वी कैन रिफ्लेक्ट कि ये डेंजर क्यों नहीं हमें समझ में आ रहा, या अगर मालूम नहीं पड़ पा रहा या पढ़ पा रहा है तो उसको महत्व क्यों नहीं दे पा रहा। एंड देन वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन द निस्सरण। निस्सरण इज बीइंग ए स्टैंडर्ड अफेयर व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेनी टाइम्स। तो इस तरह से वी कैन इन ईच ब्रेकआउट रूम वर्क आउट फॉर ईच ग्रुप के अपने हर एक के अपने अपने लिए आइडेंटिफाई कर ले, और जो कोऑर्डिनेटर हैं देन दे कैन प्रेजेंट, and then we can have a common discussion on understanding from each other's experience. I hope that is clear. So then I'll make the breakout rooms. Do you want to suggest some criteria, Dharsab, for Aswadan? Because based on the past experience, jo Roop wala tha, everything that arises to us seems to attract us, from tomatoes to parents. So now, वो तो जी जी, जैसे मैंने निवेदन किया, जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट संखार है उनको देखा जाए, जो कि जिसके कारण हमारे जीवन में बड़ा भारी असर पड़ रहा है, जो हमारे इन लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। उन सबको, जो माइनर चीजें हैं उनको बाद में देख सकते हैं, क्योंकि when we do self investigation it's always helpful to identify the prominent sankharas। जैसे prominent craving क्या है, और फिर उस पे काम करेंगे। उस पे अगर मदद काम करके हमारी सफलता मिलती है, हम अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी डेवलप कर पाते हैं और उस पे सफलता मिलती है, वो हमारा संस्कार कम हो जाता है या वो क्रेविंग कम हो जाती है, उसमें डेंजर मालूम पड़ने लगता है आस्वादन में, then it becomes a very positive feedback for us to work on the other domain also. So we could start from the one which is really prominent in our life. Minor चीजों को we can keep them at in abeyance for the time being. That's my suggestion. so I think one of the things that you had proposed earlier is कि कौन सी चीज बार बार आती है. That was one criteria you had proposed, for जी example. वही जो हमारे लिए prominent चीज है, उसका मतलब यही है कि हमारे लाइफ में उसका बहुत महत्व है, and therefore it is becoming apparent quite often. और भी कुछ अगर छूट गया हो तो बनते जी आप सजेस्ट कर दीजिए। Well, I was just trying to remember back कि हमने रूप वाले में ये जो hurdle था वो कैसे पार किया था, because I remember we spent few sessions just in a sense ourselves struggling with figuring out के is this really आस्वादन or is it just a one off, because you said, I remember कि कईयों में उठेगा, and I think you distinguish between चित्तानुपसना and धम्मानुपसना then also कि उठता है और चला जाता है, that's one, उठता है और बना रहता है या बार बार उठता है, that sort of a thing. So मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा था just to make sure that we don't again जी ठीक बात, बिल्कुल। जो जो चीजें जिनका हमको जिनके प्रति राग जागता है, थोड़ा सा देखा उसको और वो निकल गया, तो then it's not a prominent sankhara, it's still a lingering mild sankhara. But if it is again and again happening and we are
again enjoying that for long periods of time, and और क्या हमें मालूम पड़ गया है कि ये, और फिर हमारे उसमें उसके अंदर खासतौर पर जो प्रिय चीजें होती है उसमें डेंजर देख पाना काफी मुश्किल काम है। तो दैट्स द रियल चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस कि जो चीज प्रिय लग रही है, जिसमें आस्वादन आ रहा है, उसमें हम डेंजर कहाँ से देख पाएंगे, देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। So that will be a very good criteria for us to check on that. Okay. The coordinators of each session, room number 1, दीप्ति जी, क्या निष्कर्ष निकला? सबको क्लियर है? आस्वादन की बात सबको क्लियर है? सर उसका एक -1 स्टेप लें तो पहले तो थोड़ा सा हमें चैलेंज ये भी हो रहा था कि टू नो कि किस बात के आस्वादन पे हमें डिस्कशन करना है। थोड़ा सा हमने कुछ क्योंकि हमने कहा था कि प्रोमिनेंट संखार, तो हम थोड़ा डिस्कशन हमारा संखार पे भी चला गया। देन वी कोर्स करेक्टेड एंड वी फोकस्ड ऑन वेदना। फोकसिंग ऑन वेदना ना। जी जी। तो जो बातें निकल के आई वो ये थी कि अब जैसे मैं एग्जांपल ही ले लेती हूँ कि जैसे भारतीय आंटी ने कहा कि यू नो शी हैज अ क्लियर आस्वादन, शी टेक्स आस्वादन इन मिठाई वर्सेस चॉकलेट। चॉकलेट जैसी चीज को वो त्याग कर पाई हैं बट इसको नहीं कर पाई हैं, डिस्पाइट यू नो द फैक्ट दैट शी इज अ डायबिटिक। एनीवे दैट्स अ स्लाइटली सेकेंडरी थिंग, बट द पॉइंट इज दैट देयर इज क्लिंगिंग। वो डेंजर तो देख पा रही हैं कि मेरी क्लिंगिंग की हैबिट है, लेकिन फिर भी उसको ट्रांसेंड नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा हमने एक और एग्जाम्पल में डिस्कस किया कि अगर रूप के प्रति किसी को आस्वादन है, इस पे हमने डिटेल तो नहीं लिए थे कि रूप किस किस प्रकार के रूप की बात हो रही है, बट रूप के प्रति आस्वादन है तो अगेन डेंजर दिख रहा है लेकिन क्लिंगिंग जा नहीं रही है। एंड दैट वाज वन ऑफ द की थीम्स दैट इमर्ज्ड कि डेंजर दिख रहा है बट क्लिंगिंग नहीं जा रही है, तो फिर क्या करना है। और थोड़ा ये भी डिस्कशन हुआ कि हमारी क्या रिजॉल्व कमजोर है या एज अ मींस टू मैनेज इट शुड वी बी इन द कंपनी ऑफ वाइज पीपल। फिर इस पे हमने ये भी चर्चा की कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आस्वादन खतरा है निस्सरण की, निस्सरण के लिए हम कह रहे हैं कि अनिच्च दुख विपरिणाम धम्म। इस पे अगर हम इनफ रिफ्लेक्शन करें तो उस क्लिंगिंग की जो पकड़ है वो कमजोर हो सकती है। सो मे बी आइदर वी आर नॉट डूइंग इट और नॉट डूइंग इट इनफ टू द लेवल कि हम उस क्लिंगिंग से उस आस्वादन के पैटर्न से बाहर निकल सकें। एक उदाहरण हमने ये भी लिया था कि जैसे दीपक जी ने नॉनवेज खाना तो छोड़ दिया लेकिन अभी भी उनके सामने नॉनवेज आता है तो क्रेविंग जागती है, विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे पता चला कि जो आस्वादन है वो टेस्ट की वेदना का नहीं है, क्योंकि खा तो नहीं रहे हैं लेकिन मेंटली आस्वादन उसका अभी भी हो रहा है। एंड दैट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इनकी कभी कभी ये रिग्रेट भी होता है कि भाई अरे ये क्यों छोड़ दिया खाना। तो फिर इस पे हमने यही बात की कि थोड़ा आपने भी क्लैरिफाई किया ही था, फिर इस पे यही बात हुई कि भाई इसका वे आउट वही है कि उसका हमें बहुत क्लियरली डेंजर जो है वो सिर्फ सांसारिक लेवल पे नहीं कि इससे एनिमल्स को हानि हो रही है। ये तो फिर वही बात हो जाएगी कि एक एक प्रकार के आस्वादन को छोड़ के किसी दूसरे प्रकार के आस्वादन में पड़ गए। उसकी बजाय वी हैव टू look for a transcendental way out, which is again by reflecting enough on the anicca dukkha viparinam dhamma। और एक और उदाहरण जो आया था वो मैंने शेयर किया था कि भाई जैसे नींद के प्रति आस्वादन, तो मैंने उसे काय वेदना का एग्जाम्पल लिया था दैट आई रियलिश दैट टू द पॉइंट ऑफ स्लीपिंग मोर एंड लॉन्गर, एंड देन यू रेकमेंडेड कि उसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है। तो वन में वांट टू इन्वेस्टिगेट दैट कि उसका ट्रिगर क्या है, वो कोई बॉडीली डेफिशिएंसी है या कोई किसी चीज को अवॉइड करना ही चाह रहे हैं या फटीग है या कोई भोजन के वजह से। so that's something that I would need to apply as a practice for myself। ये जो प्रश्न आया ना कि
डेंजर देख भी पा रहे हैं और फिर भी नहीं छूट रहा है, या दूसरा था सप्रेशन का कि हमने सप्रेस कर दिया तो उसका डेंजर जो है वर्ल्डली लेवल पे देख के सप्रेस कर दिया। तो डेंजर इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ इज डेंजर फ्रॉम द स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ remaining in the cycle of birth and death. So it's not the issue about meat or any other thing. It's about eating in general. Taste, attachment to taste. एंड फूड के बारे में हमने काफी चर्चा की थी, आपको याद होगा, कई सारे एग्जाम्पल भगवान ने दिए गए। सो ईच केस यू हैव टू हैव अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू दैट। फॉर एग्जाम्पल, ए जेनरिक रिस्पॉन्स टू द फैक्ट कि हमसे कोई चीज समझ में आ गई और फिर भी नहीं छूट रही इज दैट वी डोंट हैव समथिंग हायर टू लुक फॉर। आपको याद होगा भगवान ने कहा था कि इंद्रियों के प्रति जो टेस्ट, ऑब्जेक्ट्स के प्रति जो आस्वादन है वो तब तक नहीं छूटा जब तक कि मुझे हायर लेवल ऑफ हैप्पीनेस, निरामिष सुख का अनुभव नहीं हुआ, तब तक वो मुझे छूटा नहीं। भगवान खुद अपना बोधिसत्व कह रहे हैं अपने बारे में। So that is the advice given, that we should really seek the development of a, say, meditative joy, the joy of purity of mind, you know, those kind of joys will make this। वही जो उसमें था ना निस्सरण वाली बात, आपको याद होगी, उसमें सारी घैसितानी सोमनसानी and nekhammasitani somanas. If nekhammasitani somanasani arises, the घैसितानी somanasani becomes automatically drops off. So we have to work in that way. You know, the idea of taking non-vegetarian food or non-vegan, they have their own validity in the worldly domain. But in the spiritual domain, we're talking about the basic taste. So, for example, Buddha talks about food. Why should we eat food? There are specific advice. Food is meant for this purpose. You know, we कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, कई सुत्तों में चर्चा आती है, food should be eaten entirely for the nutritional value, food requirement of the body for nutrition. It's not meant for taste. That doesn't mean we make distasteful, but we are not seeking taste in it. So once that clarity emerges, the nutritional point brings about automatically a change in taste, and then the dropping of other things happens. So the point is that we're not getting sucked in the sense door of the tongue. जो सेंस डोर, टंग का सेंस डोर के प्रति जो आकर्षण है उसमें हम फंस नहीं रहे, उसमें ग्रैस्प नहीं करते। So we are able to drop that sense door. Same thing applies to each and every other sense door. Okay, so we can have for food, for example, we can have specific examples. रूप अगर किसी की व्यक्ति के प्रति specifically है, then we can apply those specific examples, you know, those we have discussed, asubh bhavana and others. तो इस तरह से once we identify the problem clearly, then we can really move. That's where the importance of identification is there. Okay. Then group number 2 में Geeta. We all have understood, like seeing the danger, gratification. Now applying the antidote or to come out of it, escape. That was the weak area to work on it. Because you know we are still like उसी में बह जाते हैं, get carried away. So I'll just sum it up in short. Like दो चीज के बारे में डिस्कशन हुआ था, एक तो रूप को लेके और दूसरा विचार को लेके। So are we talking of रूप or Vedana arising from? Vedanā, having a gratification, basically स्वादन। रूप के प्रति ग्रेटिफिकेशन हमने पहले चर्चा कर चुके हैं ना, और ऑफ कोर्स में से इसमें डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है, बट इट्स वर्थ बीइंग माइंडफुल ऑफ दैट। So one is like contact, when coming in contact with a woman, basically to do with the physical contact. So वो उससे like you know वो जब होता है तो सब कुछ भूल जाते हैं, seeing आस्वादन, like you know get carried away with it, और बिल्कुल reflections नहीं होता है, कभी कभार अशुभ भावना हो जाता है, but still need to work on it. Like the antidote is available, but it's only that is like you know how much one is working towards this is
पॉइंट which was discussed in the group कि हम कितना कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जब होता है when there is a contact, जब चक्षु like सामने वो रूप आता है तो like then everything is forgotten and like you're like just getting indulged in that pleasant feeling. So but practice is still on and somehow there is a realization, but a deeper realization or completely dropping has not happened as such. The second thing is the attraction towards the family members as such कि और या तो different colors या कपड़ों को लेकर अलग-अलग कपड़ों को पहनना. These are the three things. The strongest was the physical contact as such, and the second thing was also about one like in general Shivendra ji ने बताया था कि again he also has the same problem like getting carried away with the by seeing the sight as such, object को देखकर चक्षु विज्ञान. So उसमें like he to some extent वो देख पा रहे कि ये दुख है, लेकिन कभी-कभी अशुभ भावना भी हो जाता है, लेकिन वो drop completely नहीं हुआ है because the insight has not been like very insight. But उन्हें बार-बार ऐसे लगता है कि ये सब करने से मैं दुख में ही रहने वाला हूँ, I will not be able to come out of the birth and death process. और चीज उन्होंने बताया था कि ये जब उन्हें होता है तो इनमें जो पेशेंस लेवल जो है, परसिस्टेंस नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो ऐसे लगता है कि क्विक रिजल्ट्स चाहिए. उसके हिसाब से हम कितना काम कर रहे हैं. सो देयर इज वन क्वेश्चन मार्क हैज सच. And second, to do with myself also. And पायल ने ये कहा था कि she's right now, what she's saying is कि all six sense internal basis के प्रति इतना she's not able to work on it. One of the thing what she identified, but she's not sure whether this is the strongest, that is to do with food, taste. तो वो खाने के बाद में उन्हें वो डेंजर दिखता है बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, या बहुत ज्यादा खा लिया है तो वो तकलीफ होती है तो पता चलता है, बट कंप्लीटली ड्रॉपिंग ऐसा तो हुआ नहीं है. एंड ऑल्सो टू डू विथ दीपक जी, to do with me and Payal, we all three have come to a conclusion. Like for me also, there is a lot of proliferation which happens. The thoughts keep on going, and sometimes I really get carried away with the thoughts, and like usme I get indulged and carried away with it. And now off late, after I've started talking to you sir, तो थोड़ा बहुत sutta वगैरह पढ़ने लगी, तो I've started applying antidote. Basically give attention, not pay attention, one is, and also seeing the danger and dropping it, or use the samma vayamo, like work towards it. If I'm not able to observe the feelings as such as feeling, then the other way is to just distract my mind and work on something else. So, and I could also see how the thought process is also changing, क्योंकि एक thought particularly लेके मेरा नहीं होता है. किसी के साथ में मैं बात कर रही हूँ 10 days, if there is a conversation, उस टाइम पर उस थॉट को लेकर एक फीलिंग जागती है, एंड देन आई गेट कैरिड अवे. वो थॉट छूटता है तो दूसरा थॉट के प्रति वो फीलिंग्स जागती है. तो आई कुड सी दैट देयर इज लाइक आई हैव टेकन इट दिस वे दैट आई डोंट वांट टू टेक दिस पर्सनली. तो मेरा माइंडफुलनेस थोड़ा सा पहले से इट इज लिटिल बेटर. Second thing what I wanted to say is रूप के प्रति जो चक्षु विज्ञान, I am still not able to identify whether I have lot of gratification towards the object as a person or towards the sound. तो वो मैं अभी तक distinguish नहीं कर पाई. So this is what in short what we discussed in the group. No, thank you. See, when we talk about पहले हमने किया था ना, रूप के प्रति आस्वादन हो रहा है, या रूप से पैदा होने वाली वेदना के प्रति आस्वादन हो रहा है, या रूप के प्रति जो आस्वादन है वो किसी एक परसेप्शन के कारण हो रहा है. All of them will be working simultaneously. We can't run away from that fact, but we are doing separating them for sake of intensity. What is the intensity? कहाँ पे इसका impact है? तो एक तरीका शायद मैंने पहले भी हिंट किया था कि वो रूप के प्रति है या रूप जनित वेदना के प्रति है. It is a
it is a suggestion, it's not a canonical formulation like that, कि भाई अगर एक पर्टिकुलर आदमी के प्रति है या पर्टिकुलर लेडी के प्रति है, then it is towards the root. But if it is a generic stuff, I look at any woman and the sensual creative lust arises, then it is towards the feeling which arises on seeing a woman or the man, depending on the condition. Because I deeply admire that one of the participants was able to say it so openly, very good friend of mine. So sadhu art to him. So we can see that fact, so we can distinguish between these two things. That just for the sake of clarity, putting it in a category, that no other value. They are all going to operate simultaneously. Now, as far as the proliferation is concerned, and as far as the limitation of, we can have aswadan in proliferation. हमको मजा आता है विचार सोचने में और सोचने में लगे रहते हैं. No, that is a very very difficult thing to catch. उसमें डेंजर दिखता ही नहीं है ना. I had gone through this. तो उसको पोस्टमार्टम करना पड़ेगा ना. That's why the need for reviewing our, making our meditation practice of reviewing what happened during the day. If I am getting lost and if I find it over a period of time, I'm enjoying these mental raciocinations and prapanch ko मैं enjoy कर रहा हूँ, then I have to reflect on it. Okay, what exactly is going on? Why am I not able to see the danger in it? Then reflect on that. Make that the prominent practice. You see? For example, if I have still that I look at opposite gender and it creates a strong sense feeling in my mind, and which even results in the body and so on, then I should work primarily on that. Not only when that event happens, then I will work. No. Then that should be my primary practice. Ashubha Bhavana, and we can innovate. In one of my discussions with one very close one IIT alumnus, almost of my age, we had discussion on this topic. He was himself ashamed कि अभी तक जाता नहीं है यार, इतने साल हो गए. Then I had to innovate and tell him, okay, do this way and you will get out of it. And he said, अच्छा ऐसा भी सोच सकते हैं. Yeah, there is no fixed rule for thinking of Ashubha Bhavana. You can develop your own ways so that you get repelled from the act of the interaction of that kind. So we can innovate, but then that should be a very great focus on it, because once you realize the danger, truly realize the danger, then we'll focus on that. That is why this whole discussion on aswadan is being done. If I truly realize the danger in proliferation or in Vedana arising from opposite gender, then I will focus on that to the exclusion of everything else in terms of my practice, so that कम से कम उसका substantial reduction तो notice हो जाए. So that's why the whole idea is it. Food के बारे में है, then you work on that for food in various ways. We can work in various ways. There are suttas as terse as the Putta Mamsa Sutta, that food is eaten like the son of one's flesh, which is, so abhorrent to think of even. But that's the kind of analogy which Buddha gives. Or the analogy of the chariot and a wheel. चैरियट चींची करती है तो उसमें तेल डालते हैं कितना, इसलिए कि वो चींची करना बंद कर दे. खाना भी इसीलिए खाना कि शरीर हमारा चींची ना करे. तो उतना ही खाओ जितना आवाज, नहीं इतना खा लिया कि अब ज्यादा खाने के कारण प्रॉब्लम हो रही है. So that is beautiful examples which Buddha gives at various times, so that we can use them for reflection and create intensity of danger, more and more danger. And then the next level of sensory interaction is we develop a higher level of satisfaction, a higher level of pleasant abiding. तो जितनी हमारी pleasant abiding ध्यान में हो सकती है, उतनी अगर हम प्रयास करेंगे तो ये धीरे धीरे इनका कम हो जाएगा. For example, the desire to have said sweet after food or chocolate, these are things which can be comparatively easily handled by developing a higher level of pleasure. So whenever the thought arises, you sit, okay, let me practice mindfulness of breath and observe the whole body simultaneously for a few minutes. If I have practiced it enough, within 10 minutes, 15 minutes, the mind calms down and that whole thing is gone. I see the arising of desire for eating a sweet thing.
Then I see, okay, let me see that. That's a desire which is arising. Is it because I didn't eat enough food? If it is there, then of course I should eat. But if I find no, I have eaten enough food, but it's just a craving for sweet, then I sit, okay, I have a much higher level of pleasure available to me, and then you work on that. Or if you have the pleasure of anicca, dukkha, anatta, that's even higher level of pleasure. Then we can work on that. So depending on where we are proficient, we can work on that level and put aside the sensory pleasure. So that is the beauty of that sutta which we have been studying. We can now integrate it with the Buddha's teaching on worldly happiness and niramish sukha. So from samish you move towards niramish sukha, and then you can even move towards the nekhamasitani sukha, and then forget about that whole thing completely. So that's the way we can integrate these things to be able to handle these this kind of sensory pleasures which are overwhelming us again and again. सर आपने एक बार ये भी कहा था those whose mind like gets into proliferation like mine, 2-3 जन ने हमारे ग्रुप में डिस्कस हुआ था. You had asked me to go through the suttas on proliferation. Maybe like that will also help, because it has helped me to at least identify and work on it. Like maybe like those who discussed in the group, probably you can also just search sutta on proliferation, and you might find 1 or 2 suttas which will help. So you're on mute. वन सुत्ता जो मुझे याद है वो मधुपिंडिका सुत्ता, 18th मधुपिंडिका, जिसमें एक्चुअली भगवान जो है कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बता रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट, राइट, प्रपंच के कारण किस तरह कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है. तो you can see that, and there are many others. If you make a search, Vitakasan, I don't remember the Vitakasan, that's yes, that one also, where Bhagwan 5 antidotes की बात करते. Antidotes to resentment. Yes. So there are many things. So what we have to do is, all this will happen only if I realize the danger very strongly. If I don't take the danger seriously, then I will not apply effort. That's the beauty of that simple one word, adinava, realizing the danger in that. I hope that makes it somewhat clear. So group 3, Nikhil. कहाँ गया? हाँ निखिल. जेके शर्मा जी ने नहीं, डॉक्टर अनुरागिन ने शुरू किया था. उन्होंने बताया कि उनको मन में जो धम्म उठते हैं जब वो किसी पुस्तक को पढ़ते हैं, उस समय बड़ी सुखद वेदना होती है, और वो उनका ऑब्सेशन जैसा होता जा रहा है. अगर पुस्तक नहीं है उनके पास, उनका दूर है अपने घर से, कहीं पोस्टेड है, तो उनको परेशानी होने लगती है. तो ये उनका ग्रेटिफिकेशन है, वेदना है, मन में उठती है. पुस्तक पढ़ते समय बड़ा रस आता है उनको. और फिर हमने पूछा आदिनव क्या दिखता है, तो उन्होंने बोला आदिनव यही है कि जब पुस्तक नहीं होती है तो बेचैनी होने लगती है, और इसका निस्सरण क्या करे, तो उन्होंने बोला कि यही करना पड़ेगा कि सतीपट्ठान का अभ्यास करना होगा. चित्त में क्या चल रहा है, धम्म में क्या चल रहा है, तो इससे करके निस्सरण हो जाएगा. तो ये मेरा भी है, थोड़ा सा पुस्तकों पढ़ने के प्रति आस्वादन आता है, और ऑब्सेशन भी होता है कभी-कभी. और उसके बाद जेके शर्मा जी ने बताया कि उनको जब वो कानों और आँखों से न्यूज़ को सुनते हैं या देखते हैं, जिसमें उनको लगता है कि सोसाइटी में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो बड़ी दुखद वेदना जागती है, और वो दुखद वेदना बाद में गुस्से में भी कन्वर्ट होती है. तो मैंने आदिनव पूछा कि आदिनव क्या है, तो उन्होंने बोला आदिनव यही है कि मेरे लिए भी अच्छा नहीं है. आस्वादन क्या है? आस्वादन क्या है? आई मीन वेदना ही बताया कि इन चक्षु द्वारों पर जब मैं ये कुछ करता हूँ तो मेरे मन में दुखद वेदना जागती है. उसमें आस्वादन है क्या? न्यूज़ के प्रति आस्वादन, किसके प्रति आस्वादन है? आइडेंटिफाई दैट. हमने इसलिए 3 स्टेप बताए थे ना. पहले किस
अगर कान से कुछ सुनते हैं, उसके प्रति आस्वादन है, एक अटैचमेंट है कि आई वांट टू लिसन टू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड देन दिस हैपेंस, दैट विल बी अ बेटर वे ऑफ, बिकॉज अदरवाइज वो एक जनरल डिस्कशन हो जाता है व्हिच इज इट्स ओन वैल्यू, बट नॉट हियर. वी आर ट्राइंग टू फोकस थिंग्स इन अ पर्टिकुलर मैनर, ताकि फिर हम इन सबको इकट्ठा करके वी कैन सी इट इन मोर क्लियर. क्योंकि जब हम चीजों को समग्र रूप में देखने की कोशिश करते हैं और उसके इंडिविजुअल पार्ट्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, तो वी रिमेन विद इन सुपरफिशियलिटीज, किसी तरह से मैनेज कर लो उसको. देन इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ मैनेजिंग द अनप्लेजेंट सिचुएशन. वी डोंट वांट टू डू दैट, एक्चुअली वी वांट टू पेनिट्रेट इनटू दैट. तो मैंने निवेदन किया था ना, वी शुड लुक एट दीज. एनीवे, गो अहेड. तो सर क्या ये मतलब एग्जाम्पल ही गलत हो गया, या हम इसको विभव तन्हा कह सकते हैं कि उनके मन में ये न्यूज ना सुनाई पड़े? आप खुद विचार करके देखिए. आप, मेरे को विभव तन्हा लग रही है कि ये ऐसा क्यों द्वेष है, ये न्यूज क्यों आई, क्योंकि उन्होंने बोला एक यूटोपिया का कॉन्सेप्ट है उनके मन में, सोसाइटी शुड बी लाइक दिस. हाँ, तो देन वन कैन से कि देयर इज अ अटैचमेंट टू अ थॉट that there should be peace and harmony in the society or justice in the society. So there is attachment to that thought. Then it is not related to sound or sight. It's related to thought. And that thought is getting challenged. And then we can reflect on that and see the appropriate danger in it, see the appropriate danger of that. Because once you put it in that sense, you realize कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ. I want the world to become justice and harmony will remain in the world. Is that something within my control? Then you can reflect on that properly, na? If you just take the evident proximate things, you don't penetrate deep into the reason, na? That is the point. इसमें इतनी सी आपने बात कही तो मैंने उसको थोड़ा सा और उलझा दिया इस तरह से कह के. तो अब आप उलझ जाएंगे तो फिर आप उसको देखेंगे कि हाँ, क्या ये ऐसा है, क्या मेरे मन में ये परसेप्शन है कि या मेरे मन में एक विचार, इस विचार के प्रति एक आस्वादन है कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, और वो विचार नहीं फुलफिल हो रहा, तो इस कारण से मैं लेकिन मैं उसमें उस तरफ नहीं जाऊंगा कि वो फुलफिल नहीं हो रहा था, दुख हो रहा है. मैं तो कहूंगा ये जो आस्वादन है, इसमें क्या डेंजर है, मैं देख क्यों नहीं पा रहा, और ये विचार मुझे किस तरह से बांध के रखेगा इस संसार चक्र. So we're looking at the same thing in a different perspective. Okay, please go. Okay, sir. तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा तो सही रहेगा इस सनातन विभव और सदाचार के हिसाब से. ये भी एक तरीका है देखने का. अब आपको निश्चय करना है कि आपको क्या लगता है, सही है कि नहीं. मैं नहीं बताऊंगा ये सही है गलत है, ये आपको तय करना. There's nothing like सही गलत. There's a different perspective of looking at things. There are different perspectives of looking at things, and what is our objective? What are we trying to do? So we have to look at it from that perspective. राइट सर. और उसमें उन्होंने जैसे आपने बताया कि संसार को ठीक करना मैं चाहता हूँ, ऐसे ही उन्होंने जो निस्सरण निकाला है, वो कहते हैं कि मैं शांत होकर बैठ जाता हूँ और सेंसेशन ऑब्जर्व करता हूँ. सो आई एडेड रिमेम्बरिंग योर टॉक टू रेंदर जी कि अगर कुछ कर सकते हो तो कर भी दो. ऐसा नहीं कि पैसिव एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर सकते हो तो why to. This is the result of not identifying the aswadan. All this discussion resulted in a totally went in a different direction altogether. It went in the direction of resolving my unhappiness. है ना, कि मेरे को unhappiness हो रही है, ये संसार में बड़ा दुख है, तो मैं किस तरह से उस unhappiness से मुक्त हो जाऊं. अच्छी बात है, बट वो चर्चा हमारा यहाँ पे नहीं था. हम ये चर्चा नहीं कर रहे. समझ रहे हैं बात को. सो फोकस बना के रखना बहुत एक इम्पोर्टेंट एबिलिटी है हमारी, कि हम क्लियरली फोकस रहे, ये करना है, ये करना है, ये करना है. उससे हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, ना, एंड देन दे हेल्प अस इन finding a proper solution. Otherwise you come to a same standard superficiality. एडजस्ट कर दो फर्नीचर को, किसी तरह से सोल्यूशन हो जाए, मेरी परेशानी दूर होगी टेम्परेरीली इस समय की, दैट्स ऑल. बट उसके रूट में क्या था वो तो गया ही नहीं, रूट काज तो पता ही नहीं चला, है ना. यस सर. ये थोड़ा फाइनर होते जा रहे हैं डिटेल सर. मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ अभी कि क्या डिस्कस कर रहे हैं. लर्निंग, हम सब सीख रहे हैं भाई.
धीरे 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 we learn. Don't get worried about that. I'm just helping in looking at it from a different perspective. जी सर। उसके बाद अदिति जी ने एक बताया कि उनको चक्षु पर जब वो एक स्पर्श होता है कि घर में वार्डरोब खराब कर रखी है बेटी ने, तो उनको दुखद वेदना आ जाती है और वो उस पर अब उसको वर्कआउट कर रही है। उस पर काफ़ी 70% बोलिए अब कम, मतलब 70% रह गई है, 30% कम हो गई है। Again, it is in the same domain, na? या It doesn't bring out what is the aswadan, does it? राइट सर, राइट सर। Okay. वो जेके शर्मा जी के एग्जांपल से हम इसको कोरिलेट कर पाएंगे शायद। Okay. Next example. Sorry to interrupt, sir. आस्वादन towards cleanliness, मतलब ऐसे perfect रहना है, ये Good. बिल्कुल That's what we would have liked to speak. Yeah, very good. ये ऐसे ही रहना है, मतलब Yeah. तो वो मतलब काफी बार होती है दिन में। Yeah. मुझे लगता है कि 4-5 बजा दो इसको, अभी कितनी बार करो, फिर बजा भी देती हूँ 1-4-5 कभी कभार। फिर मुझे लगता है कि अरे छोड़ो भाई, बेचारी सीख जाएगी कभी ना कभी। हाँ, फिर मुझे लग रहा है क्यों रहना है इतनी परफेक्टली, क्यों रहना है, ठीक है चलो रख देती। Very good, very good. That's the way. तो दैट इज आस्वादन की परफेक्ट ही रहना है, इसको इधर उधर आस्वादन नहीं। towards cleanliness, attachment. राइट, हाँ, क्लीनिंग, हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होने चाहिए। I like it that way. या Simple, spick, span. Everything should be spick and span. हाँ, And then ये आस्वादन है, एग्जैक्ट एग्जाम्पल था। तो मतलब अभी वो उसी के लिए आई थी मेरी बेटी बीच में, तो मैं ऐसे रखूं, कहाँ पे रखूं, कौन सी बाहर रखूं, अंदर रखूं, पूछने के लिए आई थी बीच में। तो दूसरी चीज था कि मतलब इयरिंग के जैसे कान पे बहुत है, जैसे मुझे बचपन से आदत है कि रोमांटिक गाना सुनने का, अब घंटे घंटे सुनते रहो। अब वो नहीं रहा है, मतलब जो घंटे घंटे सुन रही थी, अब मुझे देख के लगता था कि क्या फालतू की टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। इससे अच्छा है कि थोड़ा ध्यान कर लेती हूँ या और कुछ काम कर लेती हूँ। फिर उससे ना अभी बहुत कम हो गया है, जैसे कि मैं 4-5 घंटे जो रोमांटिक गाना सुनती थी, अब मेरी आ गई है कि मैं एक गाना सुन के मुझे बोर हो जाता है, मतलब माइंड जैसे कि नहीं, उस पे सुनते सुनते लगता है कि ये ठीक नहीं है, मतलब सो वो चल रहा है कुछ। So we'll say it कि there is a पहले आस्वादन था strong towards a particular kind of sound, and now danger has been realized, and as a result of realizing danger, it is reduced. So this should be presented in this manner. Right. Very good, very good. हाँ, so I worked on it. So Good. अभी बेटी के इस पे करना है थोड़ा काम, करूंगी सर धीरे धीरे। थैंक यू। Okay, very good, very good. तो सर क्विकली भंते जी ने बताया कि उनको थोड़ा धम्म में रहते हैं वो कि भोजन के प्रति आस्वादन है, भोजन करना भी नहीं, केवल भोजन के थॉट्स, समटाइम हाउ मच टू ईट एंड इन व्हाट सीक्वेंस टू ईट एंड व्हाट पोर्शन शुड बी टेकन, उसमें वो कई बार विचारों में खो जाते हैं और उसका आस्वादन लेने लगते हैं, ऑल्दो ही इज इन द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द आदिनम, yet into that process. Thank you all. Thank you very much. I think some more clarity has emerged after today's discussion on that. Yes. And with the permission of Bhante ji, we can now move to the next phase of discussions on Sanya, because that's going to be quite a challenge. To be able to identify कि मेरा आस्वादन रूप के प्रति है कि उसके साथ उत्पन्न होने वाली वेदना के प्रति है कि रूप के प्रति मेरी संज्ञा है उसके प्रति है, quite a challenge, but very interesting thing to know it, because it clarifies our prominent sankhara. That is the point. Prominent attachment कहाँ है, perception के प्रति है, वेदना के प्रति है या उस आदमी के प्रति? That's where we should work on. Otherwise we keep on, वो कहते हैं ना नसरुद्दीन की चाबी खो गई अंधेरे में, वो ढूंढ रहा है लाइट में, तो मिलने वाले नहीं है कभी, आप कितने भी ढूंढते रहिए उसको. So that's why important to identify where is the
loss of happiness happening from, which is the root cause of that. So धन्य is one such thing which is so concealed कि वो छुपी रहती है, हमें पता ही नहीं चलता. So we'll discuss it, not discuss it, review what we have discussed from tomorrow. But I had a half a mind, I don't know, I'll present it to Bante ji. Maybe I look at it again and again, this issue of samadhi and testing it. Should we have 1 or 2 sessions on just practicing samadhi to the extent of getting some kind of handle on it, so that we can see कि हाँ ये सब जो इस इंद्रिय संवर नहीं हो पा रहा, we have some taste of a, I mean it's not easy to get it within a few hours or see, but we can give it a try. Having discussed so much of Panya, maybe we spend 1 or 2 sessions, full 1 hour of sitting, and maybe I can give some small guidance on how to practice so that we can develop the taste of samadhi. I Is think it that okay? would be really great. Yes, sir. But This would be wonderful. days will keep on increasing. This Vasa will become till next Vasa. Bandeji was telling me today. नहीं समाधि अगर हमारी और पुष्ट हो जाएगी तो कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव हो जाएंगे हमारे. So करें एक दो टर्न कर लेते हैं. What is today's Tuesday, Wednesday, Thursday? 1 or 2 turns let us do and see how it goes. And but that need that we practice it in the full during the remaining time. Also we remain mindful of that. ठीक है बनते जी? Sure, that's sure. Yeah, that's a great idea. Great idea. I think it's wonderful we are responding to the situation as it evolves rather than a fixed. Yeah, we'll take care of it. मुझे ये लग रहा है आज के that means आज के examples जो थे उनमें really Vedana didn't really come up, Dharsab, isn't it? Most of the examples were not in that category. Isn't that right? Now that you process it like this, it seems like that to me. I mean, some of them are there, but not directly coming. Say the proliferation बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब उसके proliferation से वेदना अच्छी हो रही है ना? And sweets के प्रति है तो obviously it is Vedana arising from the, it's not a particular sweet, it's Vedana arising from something sweet, or it is looking at the opposite gender, anybody, so it gives rise to certain feelings arising from there. And as I remember discussion, it affects the body and so on. So there has been indirect, but it was not explicitly mentioned, but in some cases it was not, so we had to kind of point it out. जैसे अदिति की बात को जब उन्होंने रिवर्स करके प्रेजेंट किया तो वो बात सामने आ गई. So it is not being brought out explicitly, so we need to really practice that, bringing it out explicitly. But many of them were issues of same handling of our suffering and so. So that means it's actually possible कि in many of these cases अभी वेदना कहीं छुपी हुई है and we haven't yet caught it actually. वो आस्वादन अभी हमें पकड़ा नहीं है. Yeah. इसलिए बार-बार याद दिलाना पड़ा कि आस्वादन क्या है वो तो बताइए. So it had to be unraveled. ये आस्वादन है. And then in terms of Nisarana, there are two aspects, isn't it? There is the aspect of Vinay, which is Samvar, and then there is the aspect of Prahan, which is the entire giving up. Yeah. So we didn't go into that. Like in Roop, I remember you had very, क्या कहेंगे, deliberately, cautiously, slowly done both aspects, है ना? इस केस में हमने ऐसा नहीं किया है, and it's okay, is it? Is that how you put it? I did point out, for example, these antidotes जो हमने present किए. Okay, they are somewhere. Okay. Yeah. And they will really lead to. And for example, even the practice I am suggesting for Anapan and others is somewhere. Developing samadhi is basically for somewhere, so that हमें मालूम भी है danger है और फिर भी हम उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं. तो थोड़ा सा अगर हायर टेस्ट आ जाता है तो फिर उसको छोड़ने में ज्यादा दिक्कत तो होती है, बट कम हो जाती है. So these are kind of, in my opinion, ways of indriya samvar, enabling, strengthening indriya samvar, as advised by the Bodhisattva himself.
that we should get. Of course, if we develop panya to the extent of anicca, dukkha, anatta, then obviously things will fall off straight away. But as a stepping stone in that direction, move in that direction. So, जो नेखम सोमनस है, Harsad, that's over and above jhanik Yeah. somanas, is it? Wow. Course. Yeah, obviously. It is niramistaram sukha. One is the worldly happiness. The other is samish sukha. Then is niramish sukha. Then is niramistaram sukha. Beyond that, जो भगवान भी डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, उसमें भी निरामिष तरम को वो कहते हैं arising because of purification of mind, which is basically this. So it is the apex level of practice. No? निरामिष तरम सुख जो है वो नेखम सितानी सुख में आएगा, which arises from purity of mind, because you have seen the impermanence of things so much. So now everything will fall in place when you look at it like that. So you can put the jigsaw puzzle in proper places.